Hello my dear students, welcome back to our next topic that is known as scalars and vectors. Okay, so see here in this topic, this you can say this is the most important topic throughout the physics. Why? The reason is quite simple, because every topic is based upon scalars and vectors. If you ask me क्या जेई में या नीट जैसे एग्जाम में इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आता है, आंसर इज नो. तो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि अगर इससे क्वेश्चन नहीं आता, देन व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक. द रीजन इज क्वाइट क्लियर, because this topic has application in each and every topic of physics. So that's why before studying any topic, you must know something about scalars and vectors and how to use it. So see here, we will try to understand in a easy way. And the reason is quite clear, क्योंकि वेक्टर्स बच्चों देखो ये एक कंफ्यूजिंग टॉपिक है, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है. क्लियर है? और उस कंफ्यूजन को अगर हमें हटाना है तो हम इसको बहुत ही इजी वे में, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में लेकर के चलेंगे. तो लेट्स कम बैक टू द पॉइंट. सपोज इफ आई आस्क यू व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटी, डेफिनेशन इज वेरी सिंपल. एनी फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. क्या यही डेफिनेशन है जो तुमने हाई स्कूल में पढ़ी थी? योर आंसर विल बी सर यस. हमने यही पढ़ा था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, उसको हम वेक्टर कह सकते हैं. तो लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, दैट डेफिनेशन इज नॉट राइट. व्हाई? सी हियर, यू रिमेंबर दिस, व्हाट डू यू कॉल इट? सर हम इसको तो रेजिस्टर कहते हैं. अच्छा, इसको रजिस्टर करते हैं, ठीक है जी. इसको क्या कहते हो बच्चों? सर ये बैटरी है और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? आई. Suppose if I ask you what is the direction of the current, your answer should be sir the current is moving from positive terminal to negative terminal. So in the nutshell you can say sir current has a direction. What is the direction from positive to negative? All have to know this. Okay. And if I say a current of 5 ampere is flowing through the circuit. Okay. So what will be your next assumption? You can think like this. The current is moving from positive terminal and goes back to negative terminal, as well as the current has magnitude also. तो आप ये कहेंगे कि सर इसमें तो मैग्नीट्यूड भी है और साथ ही साथ इसमें क्या है? डायरेक्शन भी है. तो आई विल आस्क व्हाट यू विल कॉल इट? यू विल सिंपली से सर इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी एंड माय आंसर इज नो. ऑलवेज रिमेंबर ओनली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. इट्स नेसेसरी. इट्स necessary but not sufficient. Always try to understand these two words, necessary but not sufficient. Clear guys? See here, just like if you are joining any XYZ coaching, okay, so it's necessary to study, but if you are studying, is it 100% possibility that you will clear any competitive exam? Answer is no. So study is necessary but not sufficient. Clear? In the same way, direction and magnitude is necessary but it's not sufficient for a physical quantity to be a vector quantity. Clear guys? So what is the third parameter? The third parameter is it must obey vector law of addition. Now you will say, sir, what is vector law of addition? तो बच्चों इसको हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे, but for a time being try to understand वो सारी physical quantities जो फॉलो करती है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन as well as which have magnitude as well as direction, all those physical quantities are known as vector quantities. And remember guys, अभी तक हमारा स्केलर एंड वेक्टर नहीं हुआ था. That's why वेक्टर्स और स्केलर के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस थे उनकी हम सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे. तो that's why what I am doing right now, अब हम लोग थोड़ा सा स्केलर एंड वेक्टर की प्रैक्टिस करेंगे so that इसके ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है, जो भी आपके नेक्स्ट टॉपिक है उसके आगे आने वाले टॉपिक्स है, उसमें हम लोग कवर अप कर सके. सो स्टे ट्यून्ड एंड लुक एट द बुक. तो पहली चीज, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर होना है तो इट मस्ट हैव थ्री थिंग्स. फर्स्ट मैग्नीट्यूड. फर्स्ट बच्चों क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड. सेकेंड पॉइंट, इट मस्ट हैव डायरेक्शन. बट दीज टू are necessary, not sufficient. I told you na the difference between necessary and sufficient. And the third and most important thing, must obey vector law of addition. Okay, it must obey the vector law of addition.
अब बच्चों ये क्या कौन सी चिड़िया का नाम है, दैट यू विल सी अ लिटिल बिट लेटर. ओके, तो यहां तक अपने को क्लियर हो गया वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एज वेल एज इट मस्ट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन. क्लियर एवरीवन? नाउ सी नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट स्केलर क्वांटिटीज, तो डेफिनेशन बच्चों बहुत क्लियर है. स्केलर मीन्स ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज which doesn't require direction, means only magnitude is sufficient to represent them, right? Suppose if I ask you a question, let's try to understand in a better way. Okay, suppose you are sitting in the class, or you sitting on your sofa, or you sitting on your chair, or whatever is the place. If I ask you the question simply XYZ student, oh my dear XYZ student, please move 10 steps. So before moving 10 steps, what is the first question comes into our mind? Sir, 10 steps to मुझे move करना है. But you tell me in which direction I am supposed to move, right? What will be your first question? Sir, yes, I can move 10 steps, but in which direction? Remember, move 10 steps. Direction is important, sir. I can move in forward direction. Sir, I can move in backward direction. Sir, I can move in right hand direction. Sir, I can move in left hand direction. So in which direction? Which means simply saying this word that move 10 steps is not sufficient. We also have to say in which direction, right guys? So all those physical quantities which requires magnitude and direction, 10 steps is the magnitude and direction is required. Those quantities will be known as vector. If we talk about scales, suppose we have a student whose name is Chintu, and I simply ask Chintu, beta khade ho jao and tell me your weight. What is your weight? And Chintu answers, sir, my weight is nearly 500 kg. Okay, 500 is too much. Let us assume 50 kg. Okay, Chintu answers, sir, my weight is 50 kg. So what I will ask him? Will I ask in which direction? Absolutely no sense. चिंटू तुम्हारा वेट कितना है? सर मेरा वेट 50 केजी है. और फिर मैं पूछता हूँ डायरेक्शन, तो बच्चों डायरेक्शन का तो कोई मतलब हुआ नहीं ना, राइट? बिकॉज डायरेक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट. ओके, वेट इज ओनली वेट. ओनली अ सिंपल नंबर इज मोर देन सफिशिएंट टू डिस्क्राइब योर वेट. सपोज इफ आई से व्हाट इज द लेंथ, ओके लीव इट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस मार्कर? You can say 10 centimeter or 15 centimeter or whatever is the length. But you'll never say like sir 10 centimeter in right hand side, in left hand side, upward side or downward side. So to represent the length of this marker, only a number like 10 centimeter or 15 centimeter is sufficient. So for all those quantities, to represent them, a simple number is more than sufficient. Those type of quantities are known as scalar quantities. Clear guys? तो यहाँ पे जो मेजर हम लोग को स्टडी करना है, that we will try to understand about vectors, right? So see here, to understand vectors, first thing, as I promised you, we will try to understand it in a very simple way, right? Suppose this is our Cartesian coordinate system, and if I want to represent any vector, then any vector must have magnitude as well as direction. Clear guys? ऑलवेज रिमेंबर, ये क्या हो गया? ये हो गया बच्चों अपना ओरिजिन. ओरिजिन का मतलब सारी शुरुआत यही से होगी. कोऑर्डिनेट्स मतलब 0 0 0, which means x coordinate is 0, y coordinate is 0 as well as z coordinate is also 0. क्लियर? इसको हम अपना रेफरेंस भी कहते हैं. रेफरेंस मींस जहां से आप किसी भी चीज की वैल्यू को मेजर करते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल योर हाइट. वेयर डू यू मेजर योर हाइट फ्रॉम? अपने पैरों से, अपनी टो से तुम अपने हाइट को मेजर करते हो, राइट? दैट इज योर रेफरेंस. बट इफ यू मूव योर हाइट फ्रॉम योर स्टमक और फ्रॉम योर वेस्ट, दैट कैन ऑल्सो बी अ रेफरेंस. बट इन जनरल वैसा नहीं होता. इन जनरल हाउ डू यू मेजर? फ्रॉम योर टो. सो योर टो इज योर रेफरेंस फॉर मेजरिंग योर हाइट, राइट? सो सी हियर, दिस इज अवर रेफरेंस, दैट इज ओरिजिन. क्या इस रेफरेंस को हम चेंज कर सकते हैं? आंसर इज यस. नेक्स्ट थिंग, कितने तरह के रेफरेंसेस होते हैं टू मेजर एनीथिंग? दिस इज आवर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. इसके बाद सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है, फिर आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है. बट वी आर लकी, वी हैव ओनली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इन आवर सिलेबस. Spherical coordinate system as well as cylindrical coordinate system is out of syllabus from JEE. Okay,
as well as in 11th and 12th board also. I don't think cylindrical and spherical coordinate systems are there, but still if you want to know, just text me in the comment box. Okay guys, तो चलो यहाँ पे शुरू करते हैं. See here, suppose if I want to represent any vector, बहुत ही सिंपल है यार वेक्टर को रिप्रेजेंट करना. यहां पे देखो, सपोज करो मैंने एक पॉइंट मान लिया P. अब ऑब्वियसली इफ वी हैव अ पॉइंट तो इसके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होंगे. चलो जी कोऑर्डिनेट मान लेते हैं इसके. हमने मान लिया x, y, z. x, y, z ही क्यों माना? Because it can have any value. X can be 1 to 100, 200, 500, any x, y, z numbers from minus infinite to plus infinite. Y, any x, y, z number. Z, any x, y, z number. So suppose if I want to represent a vector OP. अब यहां पे ध्यान से देखना. What do I want to represent? I want to represent the vector OP. अब इसमें एरो का क्या मतलब है बच्चों? ये देखो ध्यान से. इसका मतलब ये हुआ कि ये वेक्टर O पॉइंट से शुरू होगा और P पॉइंट पे टर्मिनेट होगा, which means the direction of the vector is from O to P, which means O is the starting point and P is the ending point. Clear? Starting point को हम क्या कहते हैं? टेल. स्टार्टिंग पॉइंट वेक्टर का कहलाता है टेल. जैसे आपने देखा होगा आजकल तो प्रीमियर भी हो रहा है. आई होप यू हैव वॉच्ड रामायण और महाभारत. हैव यू सीन इट? काफी लड़ाइयां होती है उसमें. क्या होता है? सिंपली देयर इज अ वॉरियर और वो क्या करता है? तीर को ऐसे लगाता है. तो तीर में बेटा जो यहाँ पे होता है ना, वो जो तीर कमान चलाता है, ये हो गया टेल. और हेड, जहां पे वो तीर वाला जो सेक्शन होता है उसको हम कहते हैं हेड. जस्ट लाइक वेक्टर. वेक्टर को उसी तरीके से समझ लो. ठीक है? This is tail and this one is head. So if we want to represent the vector, सबसे पहले हम O पॉइंट से इस पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे. O is the starting point which will be known as tail and P is the ending point जिसको हम क्या कहेंगे? हेड कहेंगे. ठीक है? और अगर इसे मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? See here, OP equals to, always remember shortcut formula. And what is that shortcut formula? That is final minus initial. जब भी हमें वेक्टर लिखना है, हमेशा हमें क्या लिखना है? फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन. एंड नाउ व्हाट अबाउट डायरेक्शन? ट्राई टू अंडरस्टैंड. वी हैव 3 टाइप्स ऑफ डायरेक्शन. अगर किसी भी पॉइंट को आपको रिप्रेजेंट करना है तो 3 तरह की डायरेक्शन अपने को रिक्वायर्ड है. फर्स्ट एक्स डायरेक्शन, सेकंड वाई डायरेक्शन, थर्ड जेड डायरेक्शन. एक्स डायरेक्शन, एनी फिजिकल क्वांटिटी विच इज प्रेजेंट इन एक्स डायरेक्शन. क्लियर? उसको हम कैसे लिखेंगे? सपोज x, y and z. We will write them with help of unit vectors, and in this case our unit vectors will be taken as I cap, j cap and k cap. ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल है. I cap का मतलब a unit vector whose magnitude is 1. Clear? What I told you, a unit vector whose magnitude is 1 and direction is x. J मतलब a unit vector whose magnitude is 1 and direction is along y. K cap means a unit vector whose magnitude is 1 and direction is along plus z axis. Right guys? So see here, I cap, j cap as well as k cap. I cap, let me repeat myself, unit vector in x direction. J cap is a unit vector in y direction and k cap is a unit vector in z direction. X direction, suppose this is our x direction, this is our y direction, then the z axis will be coming out of the plane, something like this. Clear guys? तो यहां पर देखो. अच्छा, एक एग्जांपल, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल. जैसे सपोज करो तुम्हें 1 मीटर लेंथ दिया गया. तो 1 मीटर क्या हुआ? 1 मीटर मीन्स a standard length. Suppose if I multiplied it by 10, so what does it mean? 10 meter, you can write down 10 multiplied by 1 meter. So 10 meter is basically 10 times of your 1 meter standard length. Clear? So 1 meter multiplied by 10. Now see here, in the same way, suppose if I want to write down this in a vector format, simple way में क्या करेंगे? Final x minus initial x. Write down final x is 0, final x is x, initial x is 0. And direction, see here, because we are writing it down in terms of x, so I will add a direction I. It's a way of explanation, it's not like that. Now so बस सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं. मैंने क्या बताया?
जैसे यहां पे देखो पहले था तुम्हारा मैग्नीट्यूड देन लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट। इन द सेम वे x में मैग्नीट्यूड कितना होगा, x माइनस 0, डायरेक्शन विल बी आई कैप। आई कैप लिखने का मतलब ये लेंथ है x डायरेक्शन में, प्लस final minus initial, final y minus initial y, that is y minus 0, and if you add the direction, what is the direction along y, that is j cap, so I will add j cap. Now next point, what about z? Once again same formula, final z minus initial z plus z minus 0, and z, what is the unit vector along z direction, that is k cap, so I will write down k cap. So in the nutshell, I can write down my vector OP as xi cap plus yj cap plus zk cap. सिंपल। और चलो थोड़ा सा सीख लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स कि जो भी ये अपना ओपी वेक्टर है ये x डायरेक्शन में x लेंथ प्रेजेंट है। ओके, लेट मी मेक इट x1 y1 एज एंड z1। मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं ये भी फटाफट तुम लोगों को समझ में आएगा। x1 i cap, y1 j cap, z1 k cap। Now come back to the same point. Let's try to understand it once again. x1 I cap means this vector is present in x direction by x1 units. y direction में कितने यूनिट है, y1 units, और z direction में कितना यूनिट है, z1 units. x1 y1 z1 कोई भी x y z नंबर हो सकते हैं। Clear guys? So see, this is how you represent a particular vector. Now second point, in a vector quantity two things were important. First one was direction and second one was magnitude. So what do I mean by the magnitude of a vector? Magnitude simply means length. What I told you, my dear students, magnitude simply means length. किसी भी वेक्टर की जो लेंथ है उसी को हम वेक्टर का क्या कहते हैं, magnitude. Clear? So see here, if I want to write down the magnitude, I will put this symbol OP. ये जो दो पैरेलल लाइंस टाइप की दिख रही है ना तुम लोग को, it is known as magnitude. And how will I pronounce it? Magnitude of vector OP. Learn it. What I am telling you, magnitude of vector OP. OP के ऊपर एरो का मतलब vector will start from point O and it will terminate at point P. Clear? So if I want to write down the magnitude, it will be under root simply. अब इसका फंडा क्या है, दो शॉर्टकट बताएं। वेक्टर कैसे लिखना है, फाइनल माइनस इनिशियल, एक्स में लिखना है फाइनल माइनस इनिशियल आई कैप, वाई में लिखना है फाइनल वाई कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट, डायरेक्शन विल बी जे कैप, जेड में लिखना है फाइनल जेड कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल जेड कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाइड बाय के कैप, राइट? सो इन द सेम वे, इफ यू वांट टू राइट डाउन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, हाउ टू राइट इट डाउन? रिमेंबर द शॉर्टकट फॉर्मूला, अंडर रूट I component का स्क्वायर प्लस z component का स्क्वायर प्लस k component का स्क्वायर. So how you will write it down? What is I component? x1. So I will write down x1 square. What is j y1? I will write down y1 square. What is k z1? I will write down z1 square. Remember my dear students, vector is a little bit confusing section. बच्चों को शुरू में इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि 8, 9, 10 तक you know about velocity, you know about acceleration, you have little bit idea of work, you have idea about sound. लेकिन scalars and vectors you only know the definition, right? Like vector has magnitude and direction, and scalars doesn't have direction, they have only magnitude. You only know this definition. इसके अलावा तुम्हें कुछ भी x y z आइडिया नहीं होता. So that's why I am trying to tell you vector in a very simplified manner. But still, if you have any doubt, just let me know in our comment box. Right? Okay. And always remember, these lectures are based upon NEET students as well as JEE students. And let me tell you guys once again, हम केवल बेसिक कंसेप्ट्स को कवर कर रहे हैं. सो 12th के जो स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी ये स्टडी कर चुके हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स की, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप इन लेक्चर्स को मत देखें. व्हाई? बिकॉज दीज आर बेसिक लेक्चर्स. डोंट ट्राई टू जज दिस लेक्चर इफ यू आर नॉट अ स्टूडेंट ऑफ 11th standard. Okay, if you are a 12th standard student, just see your notes because we have done a lot of things
बियॉन्ड ऑल दीज थिंग्स दीज लेक्चर्स, ये जो लेक्चर है ये बेसिक लेक्चर है और केवल ये 11th के छोटे नन्हे मुन्ने भोले भाले मासूम बच्चों के लिए है। क्लियर हो गया? चले भाई। Why I'm telling this because few students called me, उन्होंने पूछा कि सर अब ऑनलाइन लेक्चर हमें भी देखना है, तो I simply told them यार देखो ये जो लेक्चर्स है ये 11th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए ब्रिज कोर्स है, सो दैट कि जब वो क्लासेस में आएंगे तो हम फिर इसके थोड़ा आगे के लेवल पे या एडवांस लेवल पे जाकर के उनके साथ वर्कआउट करेंगे। ये अभी केवल अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए है ताकि सारी चीजों की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाए, थोड़ी सी फीलिंग आ जाए। आई टोल्ड यू ना इंपॉर्टेंस ऑफ फीलिंग इन द फर्स्ट लेक्चर। ओके, सो आई डोंट नीड टू रिपीट दैट, लेट्स कम बैक टू द लेक्चर वंस अगेन। तो बच्चों क्या हो गया, दो चीजें हमने सीख ली। पहला भाई साहब वेक्टर का क्या मतलब है, सिंपली वेक्टर मींस OP vector x1 I cap y1 j cap plus z1 k cap. And second, I told you what is the magnitude of the vector. Magnitude simply means length of the vector and that's all. Story खत्म, ठीक है। अच्छा, अगर आपको किसी वेक्टर के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स दिए गए हैं, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ वेक्टर AB something like this. Okay, this is our A point and this is our B point. Coordinates are x1, y1 as well as z1 and B has coordinate x2, y2 as well as z2. So how I will write down vector AB? I will write down, remember the formula final minus initial. I hope you can recall this, what I told you, final minus initial. What is final x? That is x2. What is initial x? That is x1. So I will write down x2 minus x1, that will represent the magnitude of the vector in the x direction. Now what I have to do, I have to add the direction. So I will add the direction like I cap. Now next, same thing, nothing new. Final y minus initial y, that would be y2 minus y1, direction will be j cap. And last one, plus z2 minus z1, direction k cap. Okay. Suppose if I want to write down the magnitude of the vector, then what do you mean by magnitude? Sir ji, magnitude means simply length of the vector. So how to write down the length of the vector? I component square. What is I component? That is x2 minus x1. So I will write down x2 minus x1 square. Then j component square. What is j component? That is y2 minus y1. So I will write down y2 minus y1 whole square. What is the k component? That is z2 minus z1. So I will write down z2 minus z1 whole square. Very good. So I hope you are clear up to here. Till now what we have done, we know how to represent a vector if we have the coordinates of starting point as well as ending point, as well as we also know what is the meaning of the magnitude of the vector. Magnitude simply means length of the vector. तो चलो बच्चों, अगर ये दो चीजें क्लियर हो गई हैं, now what next? Next we will solve the question. Okay. See here, let me take a simple problem. And the problem is we have to write down the magnitude as well as we have to write down the given terms in terms of vectors as well as its magnitude. See here, suppose we have a triangle. चलो बच्चों एक ट्राइंगल ले लेते हैं, समथिंग लाइक दिस। ये हो गया अपना ट्राइंगल और ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, -1, -2, -3। सेकेंड पॉइंट इज बी 2, 4, एनी XYZ पॉइंट सब चलता है। सी दैट इज 4, -5, 6। And what is our question? Our question is in 3 parts. A part, we have to calculate vector AB as well as its magnitude. Clear everyone? What is our B point? B point, we want to know what is vector BC as well as its magnitude. And C point, what is vector CA and magnitude of vector C. Clear? First 2 part I will do it myself and third part you will do it by yourself. Okay, that's the deal. See here. A part, see here how to solve A part. Vector AB and its magnitude. तो बच्चों यहां पे देखो इसका वेक्टर फॉर्म हमें कैसे लिखना है, बहुत ही सिंपल है. इफ आई राइट डाउन वेक्टर ए बी सिंपली मीन्स ए इज द स्टार्टिंग पॉइंट, तो भाई साहब ए से वेक्टर अपना शुरू होगा. बी इज द एंडिंग पॉइंट, तो बी पे वेक्टर अपना टर्मिनेट हो जाएगा. एंड वंस आई हैव पुट अब एरो हियर
It simply means the starting point is A and ending point is B. थोड़ी देर पहले बताया था ना महाभारत और रामायण, वैसे just like that. So A is the starting point, B is the ending point. See here, I will draw it like this. A is the starting point, B is the ending point. Starting point के coordinates क्या है? That is -1, 2, 3. Ending point के coordinates क्या है? That is B, that is 2, 4, 5. You remember our formula? What was our formula? अरे simple तो था, final minus initial, final minus initial, final minus initial. किसमें? Whether x direction, y direction or z direction. See here, easy to remember, बहुत simple. तो भाई साहब कैसे लिखेंगे हम वेक्टर ए बी? ध्यान दे बोर्ड पे, वेक्टर ए बी. सी हियर, व्हाट आई टोल्ड यू, फाइनल माइनस इनिशियल. व्हाट इज फाइनल एक्स? फाइनल एक्स सर 2 है. व्हाट इज इनिशियल एक्स? इनिशियल एक्स सर -1 है. सो आई विल राइट डाउन 2 माइनस ऑफ -1 एंड देन आई विल राइट डाउन डायरेक्शन. रिमेंबर, डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट. डायरेक्शन छोड़ दिया वेक्टर गलत हो जाएगा बच्चों, ठीक है? प्लस नाउ व्हाट आई विल राइट डाउन, फाइनल वाई माइनस इनिशियल वाई. सेम स्टोरी. What is our final y? Subject 4. What is our initial y? Subject 2. So 4 minus 2. I will write the direction, that is j cap. Clear? Next, what we will write down? Plus. What is final z? Sir 5. What is initial z? Sir 3. So 5 minus 3 and direction would be k cap. So in the nutshell, how we can write down vector AB? Vector AB comes out to be 2 plus 1. That comes out to be 3 I cap plus 4 minus 2. That is twice j cap. 5 minus 3, that is twice k cap. Okay guys, so we have written the vector AB as 3 I cap plus 2 j cap plus 2 k cap. What about magnitude? अरे सिंपल है, बताया था. क्या बताया था? अंडर रूट I कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस j कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस k कॉम्पोनेंट का स्क्वायर. कर दो भाई. व्हाट इज I कॉम्पोनेंट? 3 है तो 3 का स्क्वायर. व्हाट इज j कॉम्पोनेंट? 2 है तो 2 का स्क्वायर. व्हाट इज k कॉम्पोनेंट? 2 है तो 2 का स्क्वायर. सिंपली दिस विल बी इक्वल्स टू 9 प्लस 4 प्लस 4. सो इट विल बी 17 and units. Clear? So if we want to represent a vector AB, we can represent it. We have represented it like this: 3 I cap plus 2 j cap plus 2 k cap. And what is our magnitude? The magnitude is under root 17 units. Clear? अच्छा चलो वेक्टर्स के थोड़े बहुत एग्जांपल भी बता देता हूँ. यूनिट क्यों लिखा मैंने, ये बताओ सबसे पहले. Because vector can be any x, y, z quantity. It can be velocity, it can be acceleration, it can be force, it can be work. है वर्क? अरे वर्क स्केलर होता है बच्चों, वर्क वेक्टर नहीं होता, ठीक है? सो इट कांट बी वर्क. What I told you, displacement, velocity, acceleration, force, momentum, all these physical quantities are known as vectors. Why? Because they need magnitude as well as direction. Clear? Now, let's do the second part, B part. In B part, what was our vector? This was our vector BC, which means B is the starting point and C is the ending point. So see here, if I want to draw BC, this will represent my vector BC. B starting point, यहाँ पे ध्यान दो. स्टार्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों? सर इसके कोऑर्डिनेट है 2, 4, 5. ठीक है. व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंडिंग पॉइंट C? सर इसके कोऑर्डिनेट्स है 4, -5, 6. So I am 100% sure you can write this, but still, see here. Now see, I am rubbing this C option. Why? Because I told you it's a home assignment, and you will solve it, and you will let me know in our comment section whether you were able to do it or not. Okay? But बहुत simple है. I am 100% sure that you will be able to do it. But फिर भी कहना मेरा काम है, सुनना आपका काम है. और करना भी आपका काम है, राइट? नॉट ओनली यू आर नॉट सपोज्ड टू लिसन ओनली, यू आर सपोज्ड टू डू दिस आल्सो. चलो बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं वेक्टर BC. फिर से भाई साहब सेम स्टोरी. व्हाट आई टोल्ड यू, फाइनल माइनस इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन. इफ यू वांट टू राइट डाउन इन x, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू? दिस वाज इनिशियल, दिस इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट, C is our ending point. What is our final x? That is 4. What is our initial x? That is 2. So what I will write down, 4 minus 2. I will represent direction I can. Plus, what is our final y? -5.
What is our initial? That is 4, direction j cap. And third, what is our final z? That is 6. What is our initial? That is 5, direction will be k cap. So finally our BC vector comes out to be, this is 2i cap minus 9j cap plus k cap. Clear guys? I hope till now you are able to understand this. So we have written our vector, that is BC. Now let's calculate the magnitude. How to calculate the magnitude of vector BC? See here, under root what I told you, I component square plus j component square plus k component square. So it will be 2 square plus minus 9 square plus, what is its component? 1 square, which comes out to be under root 4 plus 81 plus 1, which is equals to under root 86 units. Why I am writing down units? Once again same explanation, because it can be anything. It can be velocity, it can be displacement, it can be acceleration, it can be force, it can be any xyz vector quantity. Suppose if it is velocity, so I will write down meter per second. Suppose if it is acceleration, I will write down meter per second square. Suppose it is force, then I will write down Newton. Okay. So I hope till now you understand what is the meaning of vector as well as its magnitude. अब क्या करेंगे बच्चों? अब थोड़ी सी स्टोरी आगे बढ़ाते हैं. ठीक है, कैसे बढ़ाएंगे? See here. Now let's move forward and try to understand types of vectors. Okay. Now let's try to understand types of vectors. Okay. See here, types of vectors. Types of vectors. Okay. Now, and one more point which I forgot to share with you guys. Actually हुआ क्या था, लेक्चर्स में थोड़ी सी डिले हो रहा था. The reason was कि एक माइनर सा एक्सीडेंट हो गया था and I suffered a leg injury. That's why बोर्ड पे खड़ा होकर के पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल था. So I hope you can understand because most people cannot. That's the problem, but ठीक है. Right now I'm feeling okay, so I'm taking the lectures and you will get the lectures properly. Okay, so don't mind. See here, types of vectors. Let's try to understand types of vectors. Now, वेक्टर कितने टाइप के होते हैं? बहुत सारे टाइप के होते हैं. पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स, राइट? ऑपोजिट वेक्टर्स. So many types of vectors. Okay, so we'll try to understand each of them one by one. कहां से शुरू करते हैं? Let's start with parallel and anti-parallel vectors. Okay. तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं parallel vectors की. Parallel and anti. Parallel vectors. चलो बच्चों अब ध्यान दो, पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स का मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल है. पैरेलल याद है कुछ? You have studied something in high school. Parallel means parallel lines. You remember parallel lines? What were the parallel lines? दो लाइंस जो एक दूसरे के पैरेलल होती है. पैरेलल का मतलब they will never intersect with each other, right? And their angle from the x-axis was same. See here, you have already studied about parallel lines. चलो पहले लाइन की बात कर लेते हैं. क्या है ये? पैरेलल लाइन. सपोज करो इसमें मैंने डायरेक्शन ऐड कर दी. व्हाट आई कॉल दिस? पैरेलल वेक्टर्स. सिंपली व्हाट आर दीज? पैरेलल लाइंस. सपोज मैंने इसमें डायरेक्शन ऐड कर दी, इसको हम क्या कहेंगे? पैरेलल वेक्टर्स. इफ यू सी द एंगल फ्रॉम द एक्स एक्सिस, इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज आल्सो थीटा. आई होप यू नो दिस and I know you have already studied all these things in your high school. ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं बच्चों? अरे दो लाइनें अगर पैरेलल है, डायरेक्शन कर दो, पैरेलल वेक्टर, राइट? नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, सर व्हाट डू यू मीन बाय एंटी पैरेलल वेक्टर? अरे सिंपल है, यहां देखो बोथ ऑफ देम हैव सेम डायरेक्शन, सो पैरेलल. Both of them have same direction, so parallel. Let me name them also. Let me assume this is my vector A and this is my vector B. This is my vector C and this is my vector B. Suppose if they have opposite directions like this. This is my vector A and this is my vector B. अभी भी parallel lines है. That's why parallel.
लेकिन डायरेक्शन, इफ यू सी द डायरेक्शन, सी डायरेक्शन 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 डायरेक्शन, the arrow is in plus x direction, the arrow is in minus x direction, and because they are opposite to each other, that's why they are anti, and because they are anti, that's why I will call them anti-parallel vector, right? See here, यहाँ पे देखो CD को, suppose this is our vector C and this is our vector D. So in this case, they are also parallel, but their direction, this is directed in plus x direction, this is directed in minus x direction. So that's why I will call them, what I will call them? I will call them anti-parallel vectors. बहुत ही सिंपल है फिजिक्स, if you try to make it simple. Okay. So पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स पढ़ लिया, खत्म बच्चों, इसका आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। और भी काफी सारे मैथमेटिकल कंडीशंस होते हैं इसके, देयर आर सो मेनी मैथमेटिकल कंडीशंस, बट अब हम उसके अंदर नहीं जा रहे। वंस टॉपिक थोड़ा सा और आगे जाएगा तो हम उसके अंदर भी जाएंगे, एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द मैथमेटिकल कंडीशंस, राइट? सो सी हियर, पैरेलल as well as anti-parallel vectors are over. Let's talk about, next we are going to discuss what? Unit vectors. Unit vectors. Now, what is the meaning? What do you understand by unit? अरे unit simple होता है यार. Unit means unit, unity. Unity means one. So any vector whose magnitude is one will be known as unit vector. नाम में ही सारा explanation है. Unit vectors. Unit means unity. Unity means one. So if any vector has its magnitude one, what I will call it? I will call it a unit vector. क्या इससे पहले यूनिट वेक्टर हमने देखा है? बिल्कुल भाई साहब, लेक्चर की शुरुआत में ही हमने देखा है. रिमेंबर, आई टोल्ड यू 3 names, and what were those names? First one was I cap. We will call it unit vector along x-axis. Okay, unit vector along x-axis. चलो पूरा नहीं लिखते हैं, टाइम वेस्टेज. Next I will say j cap. What I will call unit vector along y-axis. Next I will say k cap, and I will say it unit vector along z-axis. Clear? तो इन यूनिट वेक्टर्स के बारे में तो अपने को पहले से पता है. So what are the new ones? See here. सपोज करो बच्चों, अगर हमें एक वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाना है, कैसे बना सकते हैं? बहुत सिंपल सा फंडा है. फॉर एग्जांपल, इफ आई टेक अ वेक्टर समथिंग लाइक दिस, इज इट अ यूनिट वेक्टर? आंसर इज नो. एब्सोल्युटली नो. व्हाई? बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर. आई कैप से तुम्हें समझ में आ गया होगा, एक्स डायरेक्शन. 5 से समझ में आ गया होगा, मैग्नीट्यूड इज 5, राइट? तो सपोज करो, व्हाट वी आर थिंकिंग अबाउट मेकिंग इट अ यूनिट वेक्टर. भाई 5 आई कैप को यूनिट वेक्टर बनाना है. सो दिस इज द क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट पॉइंट विच शुड कम इनटू अवर माइंड, इफ वी वांट टू मेक इट अ यूनिट वेक्टर, हाउ इज दैट पॉसिबल? यू विल से, सर सिंपली अगर 5 की जगह 1 होता, अगर सिंपली 5 की जगह 1 होता, 1 into I cap, so we can write it down like I cap, and we already know that I cap is a unit vector, right guys? So to make it 1, what we are supposed to do? अरे बहुत सिंपल है, 5 से डिवाइड कर दो. Clear? So in the nutshell, what you are doing basically, see here, this 5 I cap has direction x and its magnitude is 5. And you are dividing it by its magnitude is 5, which simply means if I divide a vector by its magnitude, see here, if I divide a vector by its magnitude, the vector becomes a unit vector. Quite easy, no problem at all. ठीक है? If we divide a vector by its magnitude, the vector becomes a unit vector. तो चलो बच्चों, अब यही काम हम लोग करने वाले हैं. एक जनरल फॉर्मूला का वेक्टर लेंगे, उसे उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, और जो भी बचेगा दैट विल बी नोन एज यूनिट वेक्टर. सी, सपोज वी हैव अ वेक्टर ए बी. यू नो दिस मीनिंग ना? ए इज स्टार्टिंग पॉइंट, बी इज एंडिंग पॉइंट. सो ए, लेट अस assume has coordinate x1, y1 and z1, and b which has coordinate x2, y2 as well as z2.
So how to write down AB vector? Once again same वही पुरानी घिसी पिटी स्टोरी है बच्चों. क्या? फाइनल माइनस इनिशियल, राइट? x की बात करो, y की बात करो, z की बात करो, फाइनल माइनस इनिशियल, राइट? So see here, final x is x2, initial x is x1, x2 minus x1 I cap. Then I will write down final y, that is y2 minus y1 direction k cap. Then I will write down z2 minus z1 direction is k. So what is this? This is our vector AB. Now let's talk about the magnitude of this vector, which I will represent it like mod AB. What will be its magnitude? Magnitude will be x2 minus x1 whole square, y2 minus y1 whole square, plus z2 minus z1 whole square. Clear? Once again same story. Under root, magnitude means under root I component square plus j component square plus k component square, right? So how to write down? Next question arises, how to write down vector AB? Remember what we have done earlier, we have divided the vector by its magnitude. So see here, if I want to write down a unit vector, यहां पर देखना, इसको हम कहते हैं cap. AB के ऊपर this particular section is known as cap. If you have written a cap type symbol like this, then it will represent a unit vector. So how to write it down? See here, simple. Vector divided by its magnitude. See here, nothing new, same old thing. वहां पे क्या किया था? 5 I cap में उसके magnitude 5 से divide किया था. Here we have vector AB, so we'll divide the vector AB by its magnitude. Simple. Substitute the value. So how to write down the unit vector of ABC here? Vector AB, that is x2 minus x1 direction I cap plus y2 minus y1 direction j cap plus z2 minus z1 direction k cap whole divided by under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. Okay. And this will represent our unit vector. Now what we are supposed to do? चलो भाई, तो अब तक तो हम लोगों ने यूनिट वेक्टर तक कर लिया, ठीक है बच्चों. Now let me provide you some homework. I will provide you a question. You will calculate the unit vector, and in the comment box or in next lecture you will let me know whether you are able to solve it or not. Although I know so many of you are solving the question on a regular basis, especially कहीं कहीं जब मैं लेक्चर ले रहा होता हूँ कुछ न्यूमेरिकल मिस्टेक्स भी हो जाती है, तो all of you remind me. That is also a very good habit. So that simply tells me कि all of you are following the lectures. That's a good thing. And I remember a student जिसका DPP में I think कुछ क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम आई थी, तो बच्चों I will send the solution by Milind sir, okay? Or I will try to update on our IT point site. अगर ये दोनों चीजें नहीं होती हैं तो इन नेक्स्ट लेक्चर जो भी तुम्हारा डाउट था I will clear that, okay? See here comes the question. We have a, what is this? Rectangle यार, बचपन से पढ़ रहे. And coordinates are 1, 2, 3. This is our point B. Let's have coordinate 4, 5, 6. This is point C. -7, -3, 8. And this is point D. That is -1, 0, 1. What you are supposed to do? You are supposed to calculate unit vectors, right? What you are supposed to calculate? Unit vectors. Question is like this. Calculate the unit vectors. डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों, ज्यादा लैंग्वेज नहीं यहां पे लिख रहा मैं, बिकॉज यू कैन सी एज वेल एज यू कैन हियर, नो प्रॉब्लम. वेक्टर ए बी पार्ट एंड बी डी. सो लेट्स टेक वन मोर सी पार्ट, दैट इज ए सी. So what we are supposed to do? We are supposed to calculate unit vector AB as well as unit vector BD as well as unit vector AC. Clear guys? So in this class we have completed up to unit vectors. Rest of the vectors topic will cover in next class. Okay? So I hope you enjoyed the lecture as well as you are able to understand the lecture. See you in next class. Till then, bye bye. Take care.